Assalamu alaikum students. Today we are going to solve two numerical questions, example 12.7 and assignment 12.7, class 10 physics chapter number 12, geometrical optics. These both numerical questions are related to the topic angular magnification of magnifying glass. Angular magnification of magnifying glass में मैंने आपको बताया था कि दो cases है. When the image for maximum magnification the image is at near point and for minimum magnification the image is at infinity. तो इन दोनों केसेस को हम अब देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकली. Question is a biologist of near point distance n is equal to 26 centimeter examine an insect wing through a magnifying glass whose focal length is 4.3 centimeter. Find the angular magnification when the image produced by the magnifier is at near point and at infinity. एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसका फोकल लेंथ गिवन है कि वो 4.3 सेंटीमीटर है और जो बायोलॉजिस्ट जो शख्स इसके ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट की एग्जामिनेशन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका नियर पॉइंट भी गिवन है कि वो 26 सेंटीमीटर है. तो हमें इस मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट एंड व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी. तो गिवन डेटा में फोकल लेंथ गिवन है और नियर पॉइंट डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर है. एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है एट दीज टू पॉइंट्स. मैंने अलग अलग से उनको लिखा है. अब देखिए द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास इज, मैंने आपको बताया था एम थीटा से हम इसको जाहिर करते हैं और फॉर नियर पॉइंट वो बराबर होता है n डिवाइडेड बाई f प्लस 1. आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे. m थीटा इज इक्वल टू n इज 26 डिवाइड बाई f इज 4.3 सेंटीमीटर. इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, वो कैंसिल हो जाते हैं और प्लस 1. तो m थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 1, इट विल गिव m थीटा इज इक्वल टू 7. So the angular magnification when the image is at the near point, maximum angular magnification is 7. Now we will see the angular magnification when the image is at infinity. For minimum angular magnification, you know that magnifying glass angular magnification is n divided by f plus 1. इसके साथ नहीं है. यहाँ पर भी हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे. m थीटा इज इक्वल टू 26 divided by 4.3 centimeter. It will give m theta is equal to 6. This is the minimum angular magnification because here the image is formed at infinity. So when the eye is relaxed, the angular magnification is decreased by 1. यहाँ पर angular magnification when the eye is focused, angular magnification 7. यहाँ पर when the eye is relaxed, angular magnification is 6. So it decreases by 1. Assignment 12.7, an 8 cm focal length converging lens is used as a jeweler loop which is a magnifying glass. Estimate the magnification when the eye is relaxed and when the eye is focused at its near point. एक ज्वेलर है वो भी कन्वर्जिंग लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहा है ज्वेलरी को देखने के लिए. उसके मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और उसका नियर पॉइंट वो तो यहाँ पर गिवन नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आई के लिए ये नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं. तो अगर प्रॉब्लम में गिवन न हो तो ये हम लेंगे एन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई विच इज 25 सेंटीमीटर. तो गिवन डेटा में फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड नियर पॉइंट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई. नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है. मैंने आपको बताया व्हेन द आई इज रिलैक्स्ड, when the eye is relaxed, it means that the image is formed at infinity and the magnification is least and the magnification is minimum. मैंने आपको केस बताया कि इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन n डिवाइडेड बाई स्मॉल f के बराबर होता है. वैल्यूज हम पुट करेंगे. m थीटा विल बी इक्वल टू n इज 25 सेंटीमीटर एंड f इज 8 सेंटीमीटर. सो इट विल गिव 3.3. दिस इज द angular magnification when the eye is relaxed. Now when the eye is focused, it means that the image is at the near point and the magnification is maximum, and for that we can find angular magnification as n divided by f plus 1. So here putting the values, m theta is equal to 25 divided by 8 plus 1. It will give m theta is equal to 25 divided by 8 3.3 plus 1 4.3. Here the angular magnification is 4.3, which is maximum angular magnification.